Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज आम गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करिबा द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यार आज आम इंट्रोडक्शन पार्ट रे न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी along with its limitations विषय रे पढ़िबा सो देखो फर्स्ट आम जानि नेबा जे व्हाट इज मेकानिक्स देखो फिजिक्स रे आम स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एटा ही खास करी डील करू अच्छा the branch of physics which deals with the study of behavior of the material bodies जोटा कि तीन प्रकार थाए जनरली सॉलिड लिक्विड गैसेस कठिन तरल गैसीय ताले एमानकर बिहेवियरटा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा केमती चेंज होची एक्सटर्नल फोर्स ताकू केमती इन्फ्लुएंस करची तार स्टडी को मेकानिक्स बोली कि कहा जाए ओके एंड दिस मेकानिक्स इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स okay fundamentals of mechanics were known to the Greeks in the 3rd century BC okay ख्रीष्टपूर्व 300 पाखापाखि ग्रीक मानकू यार फंडामेंटल्सटा जଣା थिला किंतु या विषय रे भलो भाबरे धारणा दे पारले फेमस साइंटिस्ट्स लाइक गैलीलियो एंड न्यूटन so study of mechanics you can classify it into following categories generally तीन प्रकार आसीबो गोटे हला न्यूटोनियन मेकानिक्स फर्स्ट वन it is based upon obviously Newton's laws of motion. Various formulae in it are able to give you satisfactory explanation of events, but the events should involve particles of medium size मन रखो okay पूरा छोटो साइज हेले हेबनी आउ मीडियम वेलोसिटी हाई वेलोसिटी हेले भी हेबो नाही ओके तापरे सेकंड वन आसिला रिलेटिविस्टिक मेकानिक्स जो थ्रू की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें देखिबा आकु So it has been observed that the formulae of Newtonian mechanics fail to hold good when we deal with particles having high velocity जेमती कहली comparable to the velocity of light जार value है 3 into 10 to the power 8 meter per second तेणु याकू पुणी modify कले Albert Einstein based upon the phenomenon of constancy of velocity of light which is evolved as a new concept of mechanics and it can be able to provide justified answer to the problems of high speed particles okay so Einstein जो ये concept रखिले mechanics रो ताकू relativistic mechanics बोली कि कहा जाए then third one it is called the quantum mechanics okay so आ गोटे जिनस भी देखा गला जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अछि एटा इनवैलिड हो जाए when we apply it to the particles of extremely small size मन रख मीडियम साइज और मीडियम वेलोसिटी रो पार्टिकल पाई ही न्यूटोनियन मेकानिक्स टा वैलिड ओके हाई वेलोसिटी हला किंबा एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हेगला पार्टिकल्स रो देन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टा इनवैलिड हो जाए ओके सो ए जो एक्सट्रीम स्मॉल साइज माने ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल और इवन लेस एटम बा इलेक्ट्रॉन स्तर रो ओके माने फ्यू फर्मी ही पारे तार साइज ओके 10 to the power minus 13 centimeter so many phenomena like spectral distribution of energy which is emitted by a black body could not be explained if we depend only upon the classical theory of continuous variation of energy okay so yaku puni sudarile Max Planck he replaced this concept by the concept of variation of energy with discrete values classical theory कहूची continuous variation हवा कथा किंतु नाइ मैक्स प्लांक कहले ना discrete values रहिबो variation of energy रे so एई भलिया जो मेकानिक्स पुणी याकू जो मॉडिफाई करा गला फॉर द केस ऑफ स्मॉल साइज
particles, it is known as quantum mechanics. Okay, so it is mechanics ro tini prakar classification. Now before we proceed, let us be acquainted with the common terms which are used in the special theory of relativity. तो देख मेकानिक्स जिते आम पढ़ा आम कि कमन टर्म्स जाना दरकार. फास्ट है मैटर. मैटर माने इट इज समथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड इट पोजेस सम वेट. ओके, थ्री टाइप्स ऑफ मैटर आम जाचु, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. देन सेकेंड वन है बॉडी. इट इज अ पीस ऑफ मैटर व्हिच इज ऑक्युपाइंग अ बाउंड रीजन ऑफ स्पेस. तापर आसुची पार्टिकल. इट इज अ बॉडी हैविंग प्रैक्टिकली नो लिनियर डायमेंशन. यार किसी भी डायमेंशन रही लाइक योर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब किसी रही, बट इट हैज ओनली अ पोजिशन. गोटे कोऑर्डिनेट यार रहिबो, पोजिशन कोऑर्डिनेट. एंड अ पार्टिकल इज जनरली रेफर्ड टू एज ए पॉइंट मास. ओके, तापर फोर्थ वन है इवेंट. इवेंट इज समथिंग दैट अकर्स सडनली. ओके, माने घटना जदि या ओडिया ट्रांसलेट करवा. सो सडनली गोटे इवेंट मे अकर और इनस्टांटेनियसली एट ए पॉइंट इन स्पेस. ओके, सो गोटे इवेंट को आम कैरेक्टराइज करिपरिबा बाय मीन्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस. तापर आसिला ऑब्जर्वर बा दर्शक. सो obviously an agent who watches the event and keeps a track of the same, माने इवेंट केते बेले होउची, को हिसाब रे होउची, ताकू जी लक्ष्य करे आ माने तारी विषय रे नोट करे डाटा, he becomes the observer. Okay, and it may be a person or a recording equipment ही पारे. ओके, तापरे आसिला स्पेस. सो स्पेस टा टिके डिटेल आमे देखिबा. जेतेबेले आमे फिजिक्स को देखुछु ताले देखो कॉमन जो आमे डायमेंशन जो बाहर करू, मास, लेंथ, टाइम. सो मास, लेंथ, टाइम, these are taken to be the fundamental quantities. Okay, length होची the distance measured from a point in a particular direction. Now if we deal with the measurement being done in all possible direction around a point, ताले the length has to be replaced by space. एबे एटा पूरा लेंथ जोटा वन डायमेंशनल थिला एबे सबु आड को सबु डायमेंशन रे ये चलिबो. ओके, thus we can say space along with mass and time forms a set of fundamental quantities which are required for the measurement in physics. Okay, how a space jota ame कहूछु, it must satisfy the following properties, like it must be Euclidean space. Number 2, the shortest distance between 2 points should be a straight line. Curved line hele heboni. Tapare number 3, it is three dimensional. Okay, x, y और z axis जे कोनसी डायरेक्शन रे यार हमें लेंथ बाहर करि परिबा. तापरे it is isotropic in nature. Isotropic माने it has same properties in whatever direction the event may take place. Okay, anisotropic हेतिले it has different properties. Okay, से जहाँ भी हो. तापरे एटा किछटा बेसिक टर्म्स जानि सरला परे let us now see the main topic जोटा हमर relativity बा relative कहले हमें कोन बुझिबा. गोटे रेस्ट आउ मोशन, हाउ दे आर रिलेटिव. तो फास्ट है रेस्ट. देख रेस्ट माने स्थिर. सो गोटे बॉडी को आम कहीपर इट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सिमिलरली मोशन माने कौन, अ बॉडी which is changing its position with respect to its surrounding or time. So in order to study the rest or motion of a body, we have to take a point which is known as reference point. Okay, जोटा कि जदि आम कोऑर्डिनेट एक्सिस रे कहबा रेफरेंस पॉइंट ही जाए ओरिजिन. ओके, सो ये रेफरेंस पॉइंट जदि आम नहीं गला विथ रेस्पेक्ट टू दिस the body may or may not change its position. So if this reference point is at rest, okay, then rest or motion of a body is said to be absolute rest or absolute motion. Okay, reference point जदि स्थिर अछि. Now if the point of reference is not at rest, यदि reference point स्थिर नहीं, ताले the rest or motion of this body is said to be relative. Okay, so it is highly difficult
to conceive the existence of a point in this universe which is absolutely at rest. Okay, so all the bodies आमे जानिछु universe रे कोनोसी भी body rest position रे नाही. All the bodies on the surface of earth can be ruled out because आमे जानिछु earth is orbiting constantly around the sun. ଆଉ ତା ସହିତ ଏଟା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବି ଘୁରୁଛି, thus taking the bodies along with it. ତେଣୁ କୌଣସି ବି ବଡି ଆର୍ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଧରିପାରିବା ନାହିଁ. ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆମେ ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ it cannot be considered to be absolutely at rest since the solar system as a whole drifts through the galaxy. Okay, ତେଣୁ ୟାକୁ ବି ଆମେ ରେଷ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ. So a point on a distant star could be taken to be at rest, but the star is also actually moving through the galaxy. तापर यहाँ पे जो हमें देखिला a point anywhere in ether विषय हमें later on पढ़िबा. It is actually a medium which is filling all the interplanetary space. Hypothetical गोटे medium एटा. Okay, so এই ether रे थिबा गोटे point को हमें may be taken to be at rest, but the very existence of this ether is still in doubt. Okay, एटा होची गोटे hypothetical medium जेमति कहली तार existence को किछि भी prove तार नाही. Okay, and one cannot deny the possibility of ether drag also, thus producing the motion in that point. तेणु करी आमे जदि गोटे point खोजुचु it should be at absolutely rest, still then आमे किछि भी fruitful result पाई पारला नाही. तेणु करी the concept of relativity has to be evolved. Okay, absolute बोली कि किछि नाही actually जदि practically आमे देखिबा. Hence either a body has to be relatively at rest with respect to another, or it is relatively in motion with respect to another body. Okay, so the details of this relative motion shall be discussed later on. तापरे आमे आकु बढ़िबा. Let us now see the frame of reference. So जेमति आमे देखिला रेस्ट आ मोशन को आमे जदि स्टडी करबा को चाहूचु, then we must need a reference point. Here we have taken this reference point to be at the origin. Okay, and this reference point may or may not be at rest. Now a set of three mutually perpendicular axes, as you can see, x-axis, y-axis, z-axis, all these three are mutually perpendicular and intersecting each other at this point O is said to be a system of coordinates, जोटा कि होची कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तमे जानिछो. So system of coordinates whose axis can be suitably chosen along with a clock is said to be a frame of reference. आउ ए जो clock जोटा कि हमको दरकार पड़िबो in order to record the time of an event. Okay, suppose आमे गोटे point नै गला, point of observation P. Okay, so for the location of this point P we need three coordinates that are x, y and z. Okay, accordingly we will get the position vector of this point P which is r. So vector रे यारो आमे value लिखि परिबा x I cap plus y j cap plus z k cap. एटा तमे vector algebra रे पढिछो. एठी I cap j cap k cap हेगला unit vectors along x, y and z axis. Now for complete identification of an event we must know the time t also, that is the time of occurrence. Hence गोटे event को हमें characterize करि परिबा by four coordinates. गोटे हला जो set of position coordinates x, y, z, आ गोटे हला time coordinates. So x, y, z, t ये गोटा चारिटा coordinate द्वारा हमें गोटे event को characterize करि परिबा. And a reference frame describing an event in these four coordinates is known as space time frame. Okay, now let us see the inertial and accelerated frame of reference. So नारू जणा पड़ुची जे जो frame of reference टा माने inertia बा गोटे rest position रे थिबो, मे बी सेटा absolute ही पारे किबा relative ही पारे, ताको हमें inertial frame of reference कहबा. आ जोटा in motion थिबो ताको हमें accelerated frame of reference बोली कहबा. So for this purpose let us take an example.
Suppose we consider a man who is sitting on a seat in a car ଭିତରେ ଗୋଟେ seat ରେ ବସିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ while the car is at rest. Okay, car ଟା ସ୍ଥିର ଅଛି with respect to a point which is fixed on earth. Now the man can explain his equilibrium in accordance with the Newton's laws of motion. Now ଏବେ ଯଦି କାର ମୁଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାହେଲେ जो रोड रे ये मूव कला गोटे सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे even then also he can explain the man can explain his uniform motion रे भी से तार equilibrium को explain करि परिबो with accordance to the Newton's laws of motion. Okay, now एबे जदि कार accelerate कला forward direction रे with a certain acceleration ताले कोन हबो the man will feel himself pressed against the back of the seat. Okay, car जदि बेसी जोरे accelerate कला thus he need to put additional force apart from those which is given by Newton's laws. Okay, so to explain his equilibrium he has to apply additional force because जेते जेते कार आकु आकु accelerate करिवो सेते से लोकटा पछ आडकु ये माने ठेली हेबो. Okay, so in other words the Newton's laws alone cannot afford a satisfactory explanation in this third case जेतोले high acceleration को जाउची कार टा. Okay, while they could do so in the first and second case when the car is at rest or uniform motion along a straight line जोटा कि Newton's laws रे भी हम पढ़ी थाओ. Okay, rest हे पारे किंबा uniform motion along a straight line. Thus it is clear that the laws of physics can be applied in certain frame of reference while they are not applicable in certain others. So accordingly the frames of reference are classified into two categories. Okay, first one है inertial frame. So inertial frame है हमें याकू either एटा rest रे थिबो or moving with uniform velocity माने किंतु एटी acceleration टा zero हवा दरकार. Okay, so याकू हमें inertial frame बोली की कहिबा and all the laws of physics hold good in such a frame. Okay, and the above cited example जोटा हमें देखिला the car is said to be an inertial frame in the first two cases. Okay, so inertial frame रो किछटा characteristic रहउची. Number 1, all the fundamental laws of physics are valid. Number 2, the fundamental laws of physics assume the same mathematical shape in all inertial frame. Number 3, they are isotropic with respect to mechanical and optical experiment, means they have same properties in different direction. Second category है frame रा non inertial frame by accelerated frame जोटा कि हमें third case रे देखिला. It is a frame of reference which is either having a uniform linear acceleration or being rotated with a uniform speed. either linear direction गोटे straight line direction रे uniformly accelerate होउथबो किंबा rotational motion execute करूथबो ताहले हमें ताकू accelerated frame बा non inertial frame बोली की कहिबा. Now let us see the Newtonian principle of relativity. देखो यार statement आमे देखिबा आगो. It states that by performing physical experiments entirely in one inertial frame we cannot determine its motion with respect to some other inertial frame, and the phenomenon which are occurring in a closed system are independent of any unaccelerated motion of such a system as a whole. Okay, माने in other words, simple words रे कहिबा जति the laws of physics are same in all inertial frame of reference. Okay, एटा कहूची Newton principle of relativity. For example, जेमती आमे ऊपर भी देखिला कार एक्सपेरिमेंट रे से भलिया गोटे ऑब्जर्वर को आमे नेला ताकू रखी देला गोटे ट्रेन रे. ट्रेन टा सपोज रेस्ट रे अछि. आ गोटे ऑब्जर्वर नेबा observer B which is standing outside the platform. Now जदि ऑब्जर्वर A जोटा कि ट्रेन भीतर बसछि से गोटे बॉल थ्रो कला vertically upward and finds that the ball is returning vertically downward to him. कैच करूछि गोटे बॉल को. सेम जिनसटा को से जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म रे अछि ट्रेन बाहर से जिनसटा को ही से भी ऑब्जर्व करिवो. नाउ सपोज
एटा ट्रेन जेतेबेले रेस्ट रे अछि नाउ सपोज द ट्रेन starts moving with uniform velocity along a straight track ओके बंका ट्रैक नेबानी आमे गोटे स्ट्रेट ट्रैक नेबा ओके ताले ऑब्जर्वर ए जोटा कि तार बॉल को ऊपर को फिंगुची सीटा को पुणी रिपीट कला ताले he is throwing the ball vertically upwards and again finds that the ball falls vertically downward to him किंतु ए मूविंग ट्रेन रे जतेबेले बाहर थिबा ऑब्जर्वर बी प्लेटफॉर्म रे जो अछि he is standing on the platform he finds that the ball thrown upwards by the observer A in the moving train actually it is following a parabolic path ऑब्जर्वर ए को लगुच बॉलटा सीधा गला सीधा आसला किंतु ऑब्जर्वर बी कहला जे ना एटा गोटे पाराबोलिक पाथ रे गला और पाराबोलिक पाथ रे आसला ओके सो द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन कैन नॉट distinguish whether the train is moving or not because he observes exactly the same thing whether the train is at rest or in motion in a straight line आमे जेमती गोटे मुविंग ट्रेन किंबा बस किंबा गाड़ी जो थरे भी जाओ जिते बेले जे आमे ता भितरे अछु आमे एक्चुअली जदी देखिबा बाहर को जदी न देखिबा हमको सेही भितरे सब जिंस लागिबो जे एटा रेस्ट पोजीशन रे अछि देयरफॉर we conclude that eta hochi relativity okay so we conclude that it is not possible to detect the state of rest or uniform rectilinear motion mane uniform motion along a straight line of a system by performing mechanical experiments within the system itself okay ଏବେ second point को देखो the vertically upward and vertically downward motion of the ball for the observer A जोटा कि ट्रेन भीतर अछि and the motion of the ball along the parabolic path for the observer B जो कि प्लेटफॉर्म रे अछि ताकू आमे एक्सप्लेन करि परिबा by the same laws of mechanics that is the laws of mechanics remains unchanged due to uniform rectilinear motion of the frame of reference thus आमे लिखि परिबा एठी all inertial frames are equivalent and the laws of physics mane the laws of nature are the same in all inertial frame of reference okay so this is your Newtonian principle of relativity now let us see the absolute space or the concept of stationary universal frame of reference देखो एटा सेम जिनस जोटा आमे ऊपर पढ़िला जे कोनोसी बॉडी रो जदि आमे देखिबा आइदर मे बी इट इज एट रेस्ट और मोशन ताको डिफाइन करबा पई न्यूटन गोटे रेफरेंस पॉइंट रो कांसेप्ट रखिले एंड दिस रेफरेंस पॉइंट वाज assumed to be at rest okay so এই जो एब्सोल्यूट रेस्ट रे ई रेफरेंस पॉइंट को रखिबा पई किंतु आमे कोनोसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पाई परला नाही ना से पॉइंट को आमे अर्थ रे रखि परिबा ना सन रे रखि परिबा ना अन्य कौनसी प्लानेट रे रखि परिबा ओके ऊपर ए विषय आमे डिटेल पढिछु सो एटा सेम जिंस लिखा हिची सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस अ पॉइंट ऑन ए डिस्टेंट स्टार कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट and strictly speaking the assumption is still not true because distant star madhya semane drift koruchanti through their respective galaxies but due to their large distances from earth taku ame yar displacement को neglect kari pariba it is very small thus a frame of reference which is based upon a distant star can be said to be a stationary universal frame of reference जेमति कि आमे राति रे डायरेक्शन जानिबा पई ध्रुव तारा जोटा कि कांस्टेंट रहे बिकॉज पृथ्वी जो अक्ष रे घुरुची सेही अक्षर सीधारे पाखापाखि से ध्रुव ताराटा थाए तेणु आमे याकू कहि परिबा जे सेटा रेस्ट पोजीशन रे अछि बट ऑल्दो इट इज practically not true okay so a stationary universal frame of reference याकू आमे पाखापाखि नहीं परिबा up to a fair degree of approximation and the space referred to this type of frame of reference is known as absolute space okay एबे देखिबा ether कोन ether as a stationary universal frame of reference देखो Huygens introduced a theory which is known as Huygens wave theory आमे जानि छु एटा optics रे for the propagation of light he advocated that light is a wave motion and more strictly speaking এটা হচ্ছে গোটে transverse wave
जो थे कि सपोज यही डायरेक्शन रे प्रोपागेट करुच्ची ट्रांसवर्स वेव माने पुणी एठी पार्टिकल रो वाइब्रेशन ए डायरेक्शन सहित परपेंडिकुलर हबो ओके सो the theory was able to explain almost all the properties of light and the main objection to this theory was regarding the nature of medium in between sun and earth पृथ्वी आ सूर्य मझिरे जो मीडियम अच्छी सपोज गोटे किसी मीडियम टे अच्छी से मीडियम रो नेचरटा कौन थाई पारे ओके ताकू नहीं कि ऑब्जेक्शन करागला ए हाइजेंस वेव थ्योरी को ओके वी नो दैट देयर इज परफेक्ट वैक्यूम किसी भी एक्चुअली मीडियम नहीं परफेक्ट वैक्यूम अच्छी बिटवीन सन एंड अर्थ तेबे केमिति लाइट पुणी पहुंची जाउची अर्थ को सूर्य ठू ओके बिकज किसी भी तो मीडियम नहीं सो गोटे वेव टे प्रोपागेट करने पई ताकू गोटे मीडियम दरकार अब वेव मोशन कैन नॉट बी प्रोपागेटेड इन द एब्सेंस ऑफ ए मीडियम तेणु यही डिफिकल्टी को ओवरकम करने गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम रो कॉन्सेप्ट क्रिएट करागला ताकू कहगला ईथर ओके ईथर बोली गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम टे यार इंट्रोडक्शन करागला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मीडियम ether prevails over all the interplanetary space which are available and in order to explain the high velocity of light जोटा कि 3 into 10 to the power 8 meter per second or 3 into 10 to the power 10 centimeter per second এই ether को हमें यूज करिबा which is endowed with very strange and contradicting properties okay देखिबा आकु so it is supposed to possess shear modulus जोटा इलास्टिसिटी रे तमे पढ़ीछ shear modulus ये possess करे of extremely high order and a density of extremely low order. It is impossible that a substance may possess both these characteristics simultaneously. एका संगरे किंतु यदि प्रैक्टिकली देखिबा एक्सट्रीम हाई ऑर्डर रो shear modulus एक्सट्रीम लो ऑर्डर रो डेंसिटी गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंस पोजेस करि परिबो नाही प्रैक्टिकली तापरे न्यूटन while in search for a suitable frame of reference which should be absolute at rest he thought to take ether as a stationary universal frame of reference but later on यार existence उपरे क्वेश्चन उठिला एटा डाउटफुल बोली कि कहगला ओके एक्चुअली एटा गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम सेमती किछि मीडियम ही नाही एक्चुअली ओके नाउ लेट अस सी द ईथर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सपोज आम कनसीडर करवा गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज बेस्ड अपॉन ईथर सपोज गोटे ऑब्जर्वर अच्छी एट ए पोजिशन ओ who is at rest with respect to this frame and finds that गोटे रे of light cross करुची with a velocity c obviously light of velocity c तापरे आ गोटे ऑब्जर्वर अच्छी at a point o dash or o prime now this point o prime is moving with some sort of velocity v with respect to o ताले ताकू कोन देखा जिवो he find the velocity of this ray of light to be suppose c dash or c prime ताले यार वैल्यू हे पारे c dash equal to c plus or minus v okay thus in accordance with the Galilean transformation positive sign आमे कहिबा if o dash is moving towards the source of light while negative sign आमे दबा if it is moving away from the source now a number of atoms have been made to testify the validity of above result and any observation in this direction could place the ether hypothesis on a sound footing okay so गोटे यही भाया attempts करागला by two scientists माइकलसन एंड मोरली जोटा आमे आपको यांकर एक्सपेरिमेंट विषय रे पढ़िबा जोटा कि कॉन्ट्राडिक्ट करला ईथर रो हाइपोथेसिस को ओके so the results which were found by Michelson and Morley were negative because contradiction asila which was indicating that there is no change in velocity of light whether it may be observed by the observer at rest or in motion with respect to the source so ei jo negative result asila experimentally एथिरु जना गला जे ईथर हाइपोथेसिस टा होची गोटे भूल धारणा okay however a number of explanation were put forward to explain the negative result the explanation ताकू विषय ता विषय भी हमें डिटेल आपको पढ़िबा फाइनली हमरो जो न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यार बहुत किछि हमें लिमिटेशन ए
पढ़िला भितर भी देखिला ताकू समराइज करिकी एठी देखो पॉइंट वाइज आमे देखि परिबा। So first point रे it does not apply to high velocity. This is where you need to take into account Einstein's relativity. And basically Newton's mechanics does not apply to small scale or very large scale particles. Okay, it only can be applied or it only effective in normal daily life situation. For too small we use quantum mechanics, and for two large bodies like sun and gravitational force ame use kariba general theory of relativity. Second point, Newton's relativity, originally discovered by Galileo Galilei, assumes space and time are independent of each other and remaining absolute. Okay, but not being influenced by dynamics which are taking place as viewed in space and time. Okay, again puni sei kotha, this works only when one encounters object moving with very low velocity, satisfying v by c whole square is very less than 1. तापरे थर्ड पॉइंट रे देखो, न्यूटन्स रिलेटिविटी एज्यूम करुची जे जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अछि फ्रॉम ऑब्जर्वर ए टू बी who is moving with relative velocity v for an object moving with object suppose move करछि with velocity u as observed by a, ताले आमे लिखि परिबा u dash equal to u minus v. U dash इगला velocity of the object as seen by b. So again एठी जो assumption आसुची जे space आउ time टा absolute हेले जेकी एटा possible माने सपोज ऑब्जेक्ट रो लेंथ हेगला l हला एटा ऑब्जर्वर a देखिला ओके ताले ऑब्जर्वर b पाई भी एई लेंथ टा समान हेथवा दरकार आ दुईटा इवेंट्स सपोज अछि दे आर सेपरेटेड बाय सपोज टाइम t ओके एटा ऑब्जर्वर a देखिला ताले भी एई सेम टाइम गैप ऑब्जर्वर b पाई भी रहिबा दरकार ओके तो अगेन पुणी सेही कथा it works very well when the product uv is very less than c square. Okay, for instance, the Newton velocity transformation equation does not explain the speed of light c, which is remaining same. Hence, the remaining universal constant जोटा कि 3 into 10 to the power 8 meter per second अछि for all observer in inertial frames regardless of their relative velocity, okay, with respect to the source of light. Okay, so eta Michelson and Morley experiment रे proof हिची जोटा हमें next आपको पढ़िबा. Then fourth point को एबे देखो ये कहूची laws of electrodynamics, which are nothing but the Maxwell's four electrodynamic equation, and they are not the same form in the two inertial frame which are moving with uniform relative motion as per Newton relativity. Okay, however Einstein कौन कले गोटे interpretation नेले along with the Lorentz transformation equation for the position coordinates and time माने जो x y z t between the two events, and using those in this regard he obtained the Maxwell's equation remaining as the same form for all. तेणु यही सबू लिमिटेशन देखागला माने मेन पॉइंट कहले जिते बेल जाए तुमर पार्टिकलटा हाई वेलोसिटी रे मूव न करिछि ताले ठीक अछि न्यूटन्स रिलेटिविटी वैलिड अछि, किंतु बहुत हाई वेलोसिटी रे मूव कला ताले न्यूटन रो जो रिलेटिविटी अछि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सेटा आउ वैलिड हे पारिबो नाही. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स relativity and its limitation and the introduction part of your special theory of relativity. Thank you.